So last week Nifty close was 24,541 and Bank Nifty close was 55,117. So let us look at what we can expect next couple of weeks. Let us look at a chart of Nifty and Bank Nifty. So what we can see here, these are various indicators and price action levels which are mentioned here. So this was the resistance area for Bank Nifty. Okay, 24,545 or 24,550, just to round it off, and the close is 24,540. So very close to the resistance. So this resistance has acted and as expected, the rally stopped there, but then it is quite possible that next week it would move higher. And now if this level is broken, then it's quite possible that Nifty will go further higher, and further higher when I say the next resistance is close to 24,700 or 24,725. And in case that also gets broken, the next level will be 25,300 or 25,350, somewhere in that range. Okay, on the support side, the support is at 24,150 and 2400, 24,000. Okay, so 24,000 to 24,700. So this is the range which we can expect Nifty to trade in the next 1 to 2 weeks. So obviously next Monday, Tuesday, Wednesday, probably the market will remain on the higher side. And maybe from 24,700, we can expect some kind of pullback. Okay, let us look at Bank Nifty. So Bank Nifty, if you see on the chart, this is forming a descending channel. This particular yellow shaded portion, this is called as a descending channel, which is basically a bullish channel. So what it means is that it is quite possible that from here, Bank Nifty might go towards 50,000, 51,000, and from 51,000 levels, it might give another dip towards 49,000. Okay, that is quite possible. But overall, from this level, it might again give a rally and again face resistance around 51,500 or 52,000. So that is what is expected in Bank Nifty. But again, as I said, early next week, it is quite possible that Bank Nifty will hit around 51,000. Okay, and the support is close to this particular line, horizontal line. If you can see here, 49,650 or 49,700. That's the support area for Bank Nifty. So just to summarize for you, you can look at here. So this is the strong support for Nifty, 23,200. As long as 23,200 remains, we can say the market is in bullish mode. I don't think 23,200 will be tested next week or so. Next week, we can expect a dip. I mean, in case there is a dip, possibility of dip is less, but in case there is a dip around 23,800, it can go down. On the shorter time frame, 24,000 to 24,700. Okay, this is the range that we can look at. So this particular area, this is the area in which Nifty is expected to trade next week. In case 24,700 is taken out, then it is quite possible that it will move towards 25,350. So that's on the Nifty side. So Bank Nifty we already discussed. So to summarize, for Nifty and Bank Nifty, the shorter time frame range is 23,800 to 24,720. Higher time frame range is 23,250 to 25,350, and overall range is 23,250 for 24,700 and 25,350. अभी इसमें करना यह है कि in this range 24,700 to 25,350, in this area ideally people should look at doing some profit booking. Okay, and I'll tell you why you should look at profit booking, because सबको लग रहा है कि मार्केट तो ऊपर ही जा रहा है, so why should we do profit booking? We should wait for higher levels. So there is a reason why you should do profit booking. I will cover that in the upcoming slides. Similarly, for Bank Nifty, we can expect the last week close was 5,500. So there is a high possibility that 5,900 will be done. And there is a good chance that 51,400 also will be done. So around 49,700,
to 51,400 is the shorter time frame range. And overall, from the long-term point of view, 49,000 to 51,400, this is the range we can look at in Bank Nifty. Okay. So any questions so far? Everybody with me? You're clear about Nifty and Bank Nifty levels? Good. Thank you. So let us look at data. As I said, we will look at some momentum stocks in which there is a good momentum, and also we'll look at some data points for Nifty and Bank Nifty also, and for the overall market. And this is something very important. It will give you a good idea about what to expect in the market in terms of different stocks. Okay. So here you go. So any of you using Opstra currently? Can you just put it in the chat box just for my knowledge? Somebody using Opstra, can you just put it in the chat box? Okay, so you should look at using it because it gives a lot of insights. Okay. Now this is futures build-up screener. So what this particular tool shows us is the futures build-up from the data point of view. What the data is saying. Data के हिसाब से कौन से stocks bullish है, कौन से stocks bearish है, उसका information यहाँ पे हमको मिलता है. You need not go to study different charts and chart of each and every stock. यहाँ से आपको information easily मिल जाता है. So most of the people are interested in the stocks to buy. So we need to look at the long build-up stocks. कौन से stocks ऐसे हैं कि जिनमें शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म दोनों टाइम फ्रेम में बुलिश डेटा है या बुलिश ओपन इंटरेस्ट है. So these are the 5 stocks which are bullish currently. Mind you, these are stocks which are having futures trading enabled. Okay, जिन stocks में futures trading enabled नहीं है, there is a lot of small cap stocks which you may not see here क्योंकि उन्हें futures enabled नहीं होता है. So these are the stocks which have got good volume. Okay, वही stocks यहाँ पे reflect होंगे. तो अशोक लेलैंड, बलरामपुर चीनी, कोफोर्ज, ग्लेनमार्क, MCX, these are the stocks which are having a very good momentum. When I say very good momentum, ये शॉर्ट टर्म में भी बुलिश है और मीडियम टर्म में भी बुलिश है. You can also look at some stocks which are bullish only on short term. तो शॉर्ट टर्म में अगर देखेंगे तो since there was a good rally in the market, so there's a huge list of stocks which are having a short term bullishness. There are some stocks like, for example, if you can see here, Britannia in the short term is looking bullish, but in the long term it is having a short build-up, यानी bearish हो रहा है. तो ब्रिटानिया आपको अवॉइड करना चाहिए. Similarly, Voltas is giving a opposite picture. Short term it is looking bearish, but overall long term it is bullish. इसका मतलब ये है कि Voltas में आप थोड़ा डीप होने के बाद में Voltas को आप बाय कर सकते हो. So just giving you idea how to read this data. The bubble chart, again the same data is presented here in different formats. So the green ones are the stocks which are bullish. Let's look at 5-day build-up. Okay. So these are bullish stocks. These are stocks which are having long unwinding. These are stocks which are bearish red. Okay. Sorry, red stocks are stocks wherein you are having a significant short build-up. And these are the green stocks are having a bullish momentum. And then there is a concept of significant short covering. अभी short covering में क्या होता है कि these stocks are rising in price. Okay, but then that doesn't mean that those stocks are bullish. People had taken some short positions in these particular stocks, and because of the market condition, as the stocks are going higher, people are covering their shorts, and that is why these stocks are going higher.
तो इसका मतलब ये होता है कि जो स्टॉक्स में शॉर्ट कवरिंग हो रहा है वहां पे आपको प्रॉफिट बुकिंग करना है. यू शुड नॉट आइडियली ऐड न्यू पोजीशंस. आई मीन इफ यू कैन लुक एट द स्टॉक्स हियर, एबट इंडिया, बिरला सॉफ्ट, सीमेंस, जुबिलेंट फूड, डिक्सन, Oracle Finance. So these are the stocks wherein you should do look at you should do to look at doing profit booking. Whereas the green ones, these are the stocks which you can add, which you can buy for further profits. एंड रेड वंस ऑब्वियसली आर द बेरिश स्टॉक्स. ये आपको अगर स्टॉप लॉस वगैरह के आसपास है तो यहाँ से आपको एग्जिट लेना चाहिए. सो ओवरऑल इफ यू लुक एट द मार्केट, देर आर 25% अप्रोक्सीमेटली स्टॉक्स विच आर हैविंग अ लॉन्ग बिल्टअप. ओके, तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट उतना हेल्दी नहीं है. आपको बुलिशनेस दिख रहा है, बट आइडियली अगर मार्केट बुलिश है तो 60-70% स्टॉक्स बुलिश रहने चाहिए. तो रैली जो हो रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ सम सिलेक्टेड स्टॉक्स and not because of the breadth in the market. Only few stocks are rallying, and because of which Nifty, Bank Nifty is going higher. Okay, so this is how you can look at data. So again, I will come to the built-up screener and look at these stocks. You can make a note of this. These are the stocks which you should look at for fresh buying or accumulation over the next few weeks. So people are having some queries about their individual stock, area stocks which they want me to look at. So can you just put it in the chat box? What are the stocks you personally want to look at? I remember there was a query about Pidilite. Let me take a look at it. So Pidilite on the long term is bullish, okay, but currently in the short term it is not having bullish momentum. IT index, Venus pipes, okay. So Pidilite can give a breakout in case it crosses this 3200 level, and if anybody is holding it, you should keep a stop loss of around 30, around 3000. 3000 के नीचे आता है तो ये काफी बड़ा फॉल दे सकता है. It can go all the way up to 2800. So overall it's fundamentally it's a good stock, but अभी थोड़ा इसमें bearish momentum दिख रहा है. Last week the whole market rallied, but ये stock में last week में भी rally नहीं था. It was in fact down 2.5%. So that shows bearishness in the stock. पूरा मार्केट ऊपर जा रहा है, बट अगर आपका स्टॉक नीचे जा रहा है तो दैट इज नॉट अ ग्रेट साइन फॉर द पर्टिकुलर स्टॉक. उनो मिंडा, बालाजी अमाइंस. बालाजी अमाइंस लिमिटेड. Again, Balaji Amines, this is basically doing consolidation. If you can see here, it is just consolidating. The lower range for this stock is around 1880. Okay, and the higher range is 2500 and 2750, let's say. अगर आप इसको बालाजी अमाइंस को अगर कोई आप होल्ड कर रहे हो तो यू शुड लुक एट डूइंग प्रॉफिट बुकिंग, ओके, बिकॉज ओवरऑल इसका पिक्चर कुछ बराबर नहीं है. अगेन बाय द सेम लॉजिक लास्ट वीक वाज नेगेटिव फॉर इट. सो टिल द टाइम इट डजंट रियली बिकम पॉजिटिव ऑन अ वीकली बेसिस, ये स्टॉक को आपको अवॉइड करना चाहिए. अगर आपके पास में है तो यू ट्राई टू बेसिकली एग्जिट इट. यू ट्राई टू बेसिकली एग्जिट अराउंड 2400 और सो अगर वो लेवल मिलता है तो. मिधानी, लेट मी टेक अ लुक एट मिधानी. So, if you know, there was a Supreme Court verdict which basically gave the rights to states to collect tax from mining companies, and that also retrospective. Because of that, all mining stocks are down, and Midani is also a mining stock, right? So it is also down. The long-term point of view, say you can hold it, okay, and
Keep your stop loss last week's low. Last week low was around 401. So 400 के आसपास स्टॉप लॉस रख के आप इसको होल्ड कर सकते हो. एंड आई सजेस्ट एग्जिट फ्रॉम दिस स्टॉक्स. 400 का अगर ये अराउंड 445 के आसपास अगर जाता है, करंटली इट इज 420, सो अराउंड 445 एंड अराउंड 475 480 यू शुड लुक टू एग्जिट. अभी फिलहाल इसको एक्यूमुलेट करने में ज्यादा कुछ पॉइंट नहीं है. BLS ई सर्विसेज फॉर स्विंग ट्रेड फॉर 1 year. BLS ई सर्विस. BLS ई सर्विस स्विंग ट्रेडिंग के लिए यू कैन ट्रेड इट फ्रॉम योर 275 लेवल्स टू 420 और सो. अराउंड 420 एंड 300 टू 420 इस लेवल में चलेगा स्टॉक. इसको आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो इन दिस रेंज. ओवरऑल इट लुक्स ओके. लास्ट वीक इसका निगेटिव था बट ओवरऑल स्टॉक इज लुकिंग ओके एंड ये ब्रेकआउट दे सकता है. अगर 420 के ऊपर ये प्राइस इसका रहता है तो इट कैन गिव अ ब्रेकआउट ऑल्सो. इट इज क्वाइट पॉसिबल. थोड़ा इसका पैटर्न ओवरऑल बुलिश लग रहा है. HDFC बैंक सर 1500 से 1800 के रेंज में है. अराउंड 1800 के आसपास अगर प्राइस जाता है तो आप उसको एग्जिट कर लो. देर इज नॉट मच पॉइंट इन होल्डिंग HDFC बैंक. वो HDFC बैंक बैंक के डिपॉजिट के जैसा ही है. उसमें आप स्विंग ट्रेडिंग करके थोड़ा बहुत प्रॉफिट ले सकते हो बट जस्ट होल्ड करके कुछ खास उसमें आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाला है. इंस्टेड ऑफ HDFC बैंक यू शुड लुक एट अदर बैंकिंग स्टॉक्स लाइक ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, फेडरल बैंक. These are like much better banking stocks. Even SBI is better, I will say, compared to HDFC Bank currently. CDSL तो अभी बहुत ज्यादा फ्लाई कर रहा है. CDSL you should hold. Keep a stop loss of around 2500. तो अगर ऊपर मोमेंटम जाता है तो इट कैन गो टू मे बी 3300 और सो. वहाँ पे आपको प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए. करंटली अराउंड 2600 का स्टॉप लॉस लेके आप उसको होल्ड कर सकते हो अगर आपके पास में ऑलरेडी है. इनकेस वो नीचे जाता है अराउंड 2200 के आसपास तो यू कैन बाय. ओके, आई विल नॉट रिकमेंड बाइंग करेंटली क्योंकि क्या है कि ये बहुत ज्यादा ऑलरेडी ओवरबॉट है. कभी भी बड़ा फॉल आ सकता है. सो दैट्स व्हाट आई वुड से अबाउट CDSL. CDSL का बोनस शेयर भी डिक्लेयर हुआ है एंड दैट बोनस शेयर डेट इज आई गेस 24th ऑफ या 24th of August. तो उसके बाद में गिर सकता है ये स्टॉक. 24th August तक इसका बुलिशनेस रहेगा बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट आफ्टर दैट इट विल गो डाउन. View on IT index, IT index. Okay, this is the last one I will take. Nifty IT. Nifty IT is doing very good, and the reason for that I will tell you. I think I had covered in my last session also. The rate of interest in US is expected to reduce. अगर US में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है तो डॉलर का वैल्यू कम होता है. अगर डॉलर का वैल्यू कम होता है तो इट इज टिपिकली पॉजिटिव फॉर द IT sector. Okay, and that is the reason we are seeing good momentum in IT stocks, and it is quite possible that there will be a breakout. For example, a lot of IT stocks gave a breakout last week. TCS closed above 4,400, so it is quite possible that TCS will head to around 5,100. Overall, IT stocks are good. You can look at buying IT stocks next week. अगर कुछ तुम्हें डीप आता है, अगर डीप नहीं भी आता है, still some quality IT stocks you can look at buying. Okay, so let's move on. There are other topics that we need to discuss. So before we move, for those of you who do not know, we have various professional services, okay? And of course, you can go for our trainings and do the things on your own. But अगर आपको लगता है कि
आपके पास में टाइम नहीं है या आपको उसमें प्रॉपरली से नहीं हो रहा है, तो यू कैन गो फॉर अवर प्रोफेशनल सर्विसेज. वी हैव अकाउंट हैंडलिंग और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज वेर इन वी हैंडल द क्लाइंट अकाउंट्स ऑन प्रॉफिट शेयरिंग बेसिस, जिसमें आपको हम लोग प्रॉफिट जनरेट करके देते हैं और उसके ऊपर हम लोग फीस देते हैं. वी हैव फंड मैनेजमेंट सर्विसेज ऑल्सो वेर इन वी आर गिविंग assured quarterly 6% or annual 30% returns, and there is of course consulting services also available. So various professional services are available. You can think about it, consider it, and you can reach out to me to discuss in detail. There is a question about the returns on this. So in PMS, in account handling, we are able to generate like average more than 30% annually. Some years we are doing more also. Like in 2021, the returns were more than 75%. 2022 market was, as all of you might know, the market was quite range bound. So in 2022, the returns were less. 23, the returns are again good. 24, so far we already done 25-30%. So quite good returns are expected in PMS. In fixed return, the returns are anyways assured and fixed. So मार्केट परफॉर्मेंस डजंट रियली हैव अ बेरिंग ऑन दैट. वहाँ पे आपको क्वार्टरली एश्योर्ड 6% है, एनुअल 30% है. ओके, सो यू कैन डिस्कस विद मी वन ऑन वन अबाउट द डिटेल्स. Some of the trades I wanted to share with you, like what type of trades we are taking in PMS. Like for example, Idea Cellular, you can see here, we bought at 13.5, we sold at 16. We felt that there is more momentum, so we entered again and then we sold at 18. Now if you know, the stock is trading around 15 rupees. So that is the benefit of doing swing trading in stocks. Bharat Electronics, we bought at 201, sold at 232, and then some we sold at 318. Again, now the stock is quite down. Adani Enterprises bought at 3,100, again at 3,000, sold at 3,630. A very good profit. So this is the reason profit booking should be done, no matter how good a particular stock might look. For example, CDSL, a lot of you are holding. Okay, so थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कर लो, उसमें 10% 20% डाउन होता है, तो देन यू कैन बाय इट अगेन. ABB again, we bought at 6,400, we sold at 8,000, we sold at 9,000, and again now you can see it is around 8,400. In fact, अभी तो 8,000 के नीचे चल रहा है. Okay, so these are the type of trades we take in the PMS or account handling services. One guideline I want to tell you: whenever you are buying the stocks, always follow these guidelines from the risk management point of view. कोई भी स्टॉक आप जब बाय करते हो तो डोंट बाय इट इन बल्क, उसको स्टेजेस में बाय करो. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर बाइंग लेट्स से 10 क्वांटिटी ऑफ अ स्टॉक एट 100 रुपीज, तो आपको अगर उसका प्राइस नीचे आता है, उसके लिए आपको बजट रखना है. लेट्स से यू एक्सपेक्ट दैट द प्राइस कैन गो डाउन टू 85 और 80, तो वहाँ पे आपको डबल क्वांटिटी बाय करनी चाहिए. सो दैट इज व्हाट वी कॉल एज 1:2 रेशो. ऑलवेज डू डाइवर्सिफिकेशन. कीप योर पोजिशन साइज 5% to 15%. एक ही स्टॉक में 10 to 15% से ज्यादा पैसे आप मत लगाओ. प्रॉफिट बुकिंग भी आपको दो स्टेजेस में करना चाहिए. डोंट लुक टू सेल एवरीथिंग इन वन गो. जैसे कि आपने यहाँ पे देखा होगा, वी आर नॉट सोल्ड अ स्टॉक स्ट्रेट अवे, वी सोल्ड इट इन स्टेजेस T1 and T2. ओके, here also you can see we sold at 232 and 318. So these are the best practices you should follow when you are doing the portfolio management. So just follow this, it will help you to basically have proper profit and minimum losses. So some of the events which happened in the past, Japan basically raised the rate of interest, because of which we saw a very sharp fall in the market in the US and globally also. Because क्या हुआ कि जापान का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो पिछले 30 साल से उन्होंने कभी रेट ऑफ इंटरेस्ट रिड्यूस नहीं किया था. इट वॉज अ बिग शॉक फॉर द मार्केट. And Japanese investors or Japanese fund management companies, etc., they removed money from other markets and took their money back to Japan, because of which we saw a very sharp fall in the market. बाद में यूएस का सीपीआई डेटा निगेटिव आया. ओके, सीपीआई डेटा निगेटिव मतलब उसका जो इन्फ्लेशन था वो इन्फ्लेशन थोड़ा कम हुआ. तो इन्फ्लेशन कम होने की वजह से क्या होता है कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, फेड को रेट ऑफ इंटरेस्ट रिड्यूस करने के लिए उसकी वजह से Fed is basically encouraged to reduce the rate of interest if CPI is going down. But CPI going down का मतलब ये भी होता है कि आपका इकोनॉमी स्लो डाउन हो रहा है. ओके,
तो इट्स अ डबल एज स्वॉर्ड। इकोनॉमी आपका स्लो डाउन हो रहा है, फेड अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करता है तो इट इज पॉजिटिव फॉर द स्टॉक्स, बट इकोनॉमी स्लो डाउन होना इज मच मोर बिगर रिस्क फॉर द स्टॉक्स, तो उसके वजह से भी मार्केट गिरा था। और ये सीपीआई डेटा आने के बाद में जॉब्स का डेटा है, जॉब्स का डेटा पॉजिटिव था। पॉजिटिव आने क्या हुआ कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है यूएस का वो कम हो गया, तो आपका सीपीआई कम हो गया, आपका जॉब्स का डेटा पॉजिटिव आ गया, तो इट्स अ वेरी गुडी गुडी सिचुएशन फॉर द मार्केट। तो उसकी वजह से लास्ट वीक से पूरा सब यूएस का मार्केट बुलिश चल रहा है, इंडिया का मार्केट बुलिश चल रहा है। बट विल इट रिमेन लाइक दैट और नॉट, विल इट रिमेन लाइक दैट ऑल द टाइम, वी डू नॉट नो। सो आपको टेक्निकल लेवल्स स्टडी करके ही आपका एक्शन लेना है। तो ये अच्छा अच्छा तो सब हो गया। अभी नेक्स्ट वीक क्या होने वाला है और नेक्स्ट फ्यू वीक्स क्या होने वाला है कि यूएस का फेड का रेट रिडक्शन होने वाला है। Now, typically, rate reduction coincides with economic slowdown. Okay, so it may not be positive for the market. तो ये रेट रिडक्शन जब तक होता है, मे बी फॉर अनदर कपल ऑफ वीक्स, द मार्केट विल गो हायर एंड हायर, बट वहां से आप बड़ा फॉल भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। वी लुक एट द चार्ट्स फॉर दैट। रशिया यूक्रेन का एस्केलेशन चल रहा है, दिस कैन बेसिकली ब्लो आउट एनी टाइम, कुछ बोल नहीं सकते इसका। इसराइल ईरान का भी मैटर चल रहा है। तो इसराइल ईरान का जो इशू है, रशिया यूक्रेन का जो इशू है, इसका इंडिया के लिए बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है, क्योंकि ये वॉर्स का जब भी एस्केलेशन होता है तो फ्यूल का प्राइस बढ़ता है, डॉलर का प्राइस बढ़ता है। अब इंडिया एज अ नेट इंपोर्टिंग कंपनी, अगर डॉलर का प्राइस बढ़ता है, फ्यूल का प्राइस बढ़ता है, तो इंडियन इकोनॉमी के लिए वो बहुत निगेटिव रहता है, एंड इट कैन हैव अ निगेटिव इम्पैक्ट ऑन द इंडियन इकोनॉमी। तो ये निगेटिव इवेंट्स है, ये हो सकते हैं मार्केट में, वी हैव टू कीप दैट इन माइंड। एंड दैट इज द रीजन, एज आई इनिशियली सेड, अगर आपका निफ्टी ये 25,000 के आसपास जा रहा है, तो आपके पोजीशंस में आपको प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए, क्योंकि वहां से मार्केट 10% 15% नीचे आ सकता है। जैसे मार्केट ऊपर जाता है वैसे मार्केट नीचे भी आता है, ऑलवेज कीप दैट इन माइंड। लोगों को लगता है कि ऊपर जा रहा है तो ऊपर ही जाएगा, और नीचे जाएगा तो नीचे ही जाएगा। दोनों साइड में मार्केट में मूवमेंट होता है, दोनों साइड में आपको एक्शन लेना चाहिए। ओके, सो we discussed about various things. I discussed about my offerings also. This is the QR code or joining details for RGS Alpha Group. RGS Alpha Group जो है, we run it as a free WhatsApp group, जहाँ पे हम लोग ट्रेड्स शेयर करते हैं, मार्केट अपडेट्स देते हैं। जस्ट इसको फॉलो करके भी पीपल कैन मेक गुड मनी, पीपल आर टेकिंग गुड बेनिफिट ऑफ द ग्रुप। इफ यू आर ऑलरेडी देयर फाइन, अगर आप नहीं है तो आप उसको ज्वाइन कीजिए, आपके फ्रेंड्स के साथ में वगैरह भी शेयर कीजिए।